Namaskar, Suprabhat. A very good morning to everyone. Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to welcome you all to the webcast that is being organized on the auspicious occasion of the 11th Indian Organ Donation Day. The National Organ and Tissue Transplant Organization, or NOTO, has been celebrating the IODD annually to recognize the contributions of deceased donors as well as transplant professionals. I would like to invite the Union Secretary for Health and Family Welfare, Shri Rajesh Bhushan ji, to welcome our distinguished guests and begin the function. Thank you. On the occasion of the 11th Indian Organ Donation Day, let me extend a very warm welcome to Honorable Health Minister of Maharashtra, Dr. Rajesh Tope, Honorable Health Minister of Tamil Nadu, Dr. C. Vijay Bhaskar, Honorable Minister of State, Union Health Ministry, and Honorable HFM. I also welcome colleagues from the Ministry, from DGHS, and all those who are joining us in celebrating this event through video conference and the webcast. I welcome state government representatives, representatives of regional and state organ and tissue transplant organizations, transplant hospitals, transplant surgeons, physicians, transplant coordinators, NGOs, other partners. Ladies and gentlemen, since 2010, we have been celebrating this event by organizing various activities. However, this year, due to the ongoing COVID pandemic, we are celebrating the event through this video conference and webcast. The ROTOs and the SOTOs are holding parallel events in all multiple locations across the country. I take this opportunity to extend a very warm welcome to the family members of the donor families who will be facilitated today in respective ROTOs and SOTOs. It is these families who took the courageous decision to donate the organs of their near and dear ones for saving lives of millions of others in the country. In addition, annual awards will be given today to the best performers in the field of organ donation in the last 5 years. The awards are in 5 categories. There is an award for best state, the best SOTO, the best ROTO, the best hospital, and the best transplant coordinator in the country. We look at these awards not as mere awards, but as recognition of the remarkable work in organ donation, which has been done by various stakeholders. As we all know, a huge gap exists between patients who require organ transplant and the organ donors that are available. We need to promote the deceased organ donation. After natural cardiac death, only a few tissues can be donated like cornea or bone or skin, whereas after brainstem death, a person can donate many vital organs like kidney, liver, heart, lungs, pancreas, and tissues like cornea, skin, bones, heart valves, etc. So, therefore, one organ donor can save up to 8 lives and improve the quality of lives of many others. Government of India has been implementing the National Organ Transplant Program for promotion of organ donation from deceased persons. The main objective of this program is to increase the availability of organs in order to improve access to organ transplant in the country. We have also set up a apex level organization, National Organ and Tissue Transplant Organization, which has been established at Safdarjung Hospital campus, New Delhi, for setting up country-wide networking of transplant and retrieval hospitals and tissue banks. They also maintain National Registry of Transplant Cases, organ donors, etc. NOTO has over a period of time
developed a dedicated website which is www.noto.gov.in, and this website provides information on organ donation and transplantation, and also a online facility for registration of hospitals, for networking and creation of a national registry. Online and offline pledging facility for tissue donation has also been made functional. We also have a 24 into 7 helpline and a toll-free number which is 1800 So this networking is important. 5 rotos have been established in medical institutions. For example, Government Multi-Speciality Hospital Omana Durwar at Chennai, Seth GS Medical College and KEM Hospital at Mumbai, Guwahati Medical College at Guwahati, Institute of PG Medical Education and Research at Kolkata, and PGIMER at Chandigarh. These are champion institutions in the field of organ donation, transplantation, and they are leading their states in that region. State level organizations are also being set up, and one such organization is planned for each state. So far, 12 SOTOs have been sanctioned by the Government of India. They are at Madhya Pradesh, Rajasthan, Goa, Jammu and Kashmir, Kerala, Odisha, Haryana, Punjab, Gujarat, Bihar, Jharkhand, and UP. Sir, now our focus is to improve infrastructure and availability of trained manpower for organ transplant, especially in government institutions and facilities. And also our focus is that all must onboard their data on the web portal of Noto. I take this opportunity once again to reiterate the commitment of the union government to work along with all the stakeholders to promote organ donation, and I welcome you once again, particularly the Honorable HFM and Honorable MOS for having found time to be part of this celebration. I welcome you once again. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for your heartfelt words of welcome. And now we have the honor to hear a few words from the Honorable Minister of Health and Family Welfare, the Government of Maharashtra, Dr. Rajesh Tope. Namaskar, Honorable Union Health Minister Dr. Harshavardhan ji, Honorable Minister of State, Health and Family Welfare, Shri Ashwini Kumar Chaube ji, all the Principal Secretary, Mr. Bhushan ji, all the secretaries, the cadaver transplant performers, I need to say, the retrieval hospitals and the transplant teams, and all the doctor fraternity present over here, and my dear friends. It's indeed an honor to receive prestigious award of Best Soto Moto Roto for the Maharashtra government, and I take this opportunity to sincerely thank Government of India and especially the Noto for actually honoring Government of Maharashtra or the state of Maharashtra. So this will be actually I need to say you have increased our enthusiasm, and we will work with more vigor and zeal in this sector of organ transplantation. Actually, I attribute this success of Maharashtra to all the government officials of Maharashtra government, and also to the doctors and their team, those who had really contributed in this noble cause of saving lives by this skillful work of
organ transplantation. Government of Maharashtra has been the first state to adopt the 1994 Act, which was actually made by the parliament. And so government of Maharashtra since then, like 2.5 decades, we are following with the true spirit the content in this act and the spirit of this act. I mean to say, we had been working with very fair and honest way of transplant, because it is like our record is unblemished. I mean to say, we are in a very fair, there is nothing illegal done in government of Maharashtra or in state of Maharashtra. So that I just want to put to the knowledge of union government. Second point is the policies which we had adopted for green corridor and the aggressive work which has been done in registration of retrieval hospitals, even the transplant hospitals, actually has been exemplary. My small request from government of Maharashtra to the Union Health Minister, Honorable Harshvardhan ji, that whatever is my understanding, like my always name is always being mentioned, Dr. Rajesh Tope. By the way, I am not doctor, I am an engineer, just to your knowledge. And so, my request of the state is, the backbone of this organ transplant, what I think is, it is the IEC, that is the Information, Education and Communication. That means the awareness of the public at large. This is the main backbone. People do not want to donate organs of their loved because they are not aware of the significance. Like 8 lives can be saved. So awareness program is very important, and for that I wish that all the states should look into this matter, because as I mentioned, that this is really a backbone of the success of this program. So Harshvardhan ji, if a financial support can be given in 2-3 aspects which I am mentioning right now, will be really helpful in taking this program ahead. So first is IEC. To run it, the IEC program has to be given full emphasis. Number 2, the logistic arrangements. Actually, there are remote places where the accidents takes place, and the brain stem dead is to be declared and the organ is to be transported from one place to another, place of transplant. So the logistic arrangement, like even if a helicopter or a special air ambulance or a small plane, charter plane, if we can make it available, yes, if we can partner, like state and union government can partner for the funds which are required for this transportation, that will be of great help. And so logistic arrangement is a real challenge, because to take 400-500 kilometers away is a big challenge, and to create a green corridor for that again is a big challenge. So number 3 is the private hospitals, especially the government hospitals, as the principal secretary has rightly mentioned, that we should take this program ahead. And so the challenges before the hospital is they are like the dearth of neurologists
the surgeons, the intensivists, and so the declaration, which is the identification of the brain stem, which is to be made, is the real challenge. So even the private doctors should be registered in the government hospitals in the small towns so that they can be empaneled and they can be made they can be part of the committee to declare the brain stem dead patient. So that is also an important small suggestion from my side. And third point is, sir, as like the transplants which takes place in the transplant hospitals, the funds required, and especially not only for the operation but the post transplant is huge, is unbearable, I mean to say, for the underprivileged, for the poor people. And so what exactly can be done for the immunosuppressant, I mean to say, or immunity therapy which is to be given post transplant? That is also like, at what I, to my knowledge, it is 15 to 20,000 rupees. So that cannot be borne by government, poor people. So some support from even the PIP, like NHM, if we provide an item in the PIP of NHM, so from that also, if you can sanction amount to the underprivileged or to the people having a ration card of yellow ration card, that will be of great help. So these are some of the small from my state. I once again thank Government of India, especially Honorable Dr. Harshvardhan ji, for really giving me the opportunity to talk in the first, as I have to go for an important meeting of CM. And second point is, thank you for honoring Government of Maharashtra. Thank you once again. Thank you, sir, for your valuable inputs on how to improve upon the existing organ donation and transplantation program. We salute your political commitment to this noble cause, which is truly reflected in your state's performance. Now we talked about organ transplantation. So the question is, how does organ transplantation help give a new lease of life to many patients? What better way to learn about the importance of this concept than listening to the experiences of those who have actually benefited from them? So let's hear the experiences of Miss Monica Moore, who underwent bilateral hand transplant in August 2020, and then of Mr. Jason Crasto, who underwent a heart transplant in September of this year. मेरा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था 11 जनवरी 2014 साल। उसमें मैंने मेरे दोनों हाथ खो दिए थे। खो देने के बाद मैंने पूरा मतलब मेरी उम्मीद, मेरा हौसला खो दिया था, पर मेरे फैमिली ने मेरे को फिर से एक नई उम्मीद दी। फिर बाद में मैंने जो आर्टिफिशियल हैंड था वो यूज़ करने को स्टार्ट किया था, तो वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं था। उसकी वजह से मेरे को मेरी फैमिली या मेरी मम्मी की मेरे को मदद लेनी पड़ती थी। फिर बाद में मेरे को पता चला कि हैंड ट्रांसप्लांट भी ऑपरेशन होता है। फिर बाद में मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में आई डॉक्टर नीलेश साहब भाई, इनसे मिली। उन्होंने मेरे को ऑपरेशन के बारे में पूरा गाइड किया। फिर बाद में मेरा नाम रजिस्टर हुआ। नाम रजिस्टर होने के बाद मैं 2 साल वेटिंग लिस्ट पे थी, क्योंकि मेरे को डोनर नहीं मिल रहा था। 2 साल के बाद मेरे को डोनर मिला, जिन्होंने मेरे को हाथ दान किए। जिस फैमिली ने मेरे को हाथ दान किए उनको मैं थैंकफुल बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनके वजह से मेरे को एक नई उम्मीद और एक नया जीवन दान मिला है। मैं आशा करती हूँ कि मैं आगे जाके मैं खुद से सब कर सकती हूँ। उनके वजह से आज मैं खड़ी हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो अपन मतलब जो अवयव दान करते हैं, वैसे भी हाथ भी दान करना चाहिए बहुत। तो मैं लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब लोगों ने आगे आके ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए। हेलो, मेरा नाम है जेसन क्रास्टो एंड मेरा हाल ही में हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। एंड एक नया दिल मिलने की खुशी कुछ और ही होती है। मुझे लगा नहीं था ये कोविड के इसमें
पैंडेमिक में, इतनी बड़ी पैंडेमिक में मुझे ये हार्ट मिलेगा और काफ़ी जल्दी। इससे पहले मैं यूएस में था एंड वहाँ मुझे हार्ट नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मुझे इंडिया भेजा गया था कि ये कोशिश से कि मुझे हार्ट जल्दी मिल जाए। यहाँ मैं एचएन रिलायंस हॉस्पिटल में था और वहाँ मुझे डॉक्टर्स लोगों ने काफ़ी अच्छे से मदद की और मुझे बताया कि मैं कौन सी तकलीफ से जा रहा हूँ। उसमें मुझे पता चला कि मेरा हार्ट बहुत वीक है एंड ये सिर्फ 10% काम कर रहा है और मुझे ये भी पता चला कि इसकी पंपिंग बहुत कम हो रही है। इसकी पंपिंग की वजह से मेरे रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स भी काम नहीं कर रहे। स्लो एंड स्टेडीली मेरा थोड़े ऑर्गन पार्ट्स स्लो हो रहे थे, काम करना बंद कर रहे थे, सिर्फ दवाइयों पे चल रहा था। मुझे कुछ हो रहा नहीं था करने के लिए। मैं चल भी नहीं पा रहा था क्योंकि मैं चल पा रहा था पर लेकिन मुझे थकान हो रही थी क्योंकि मेरे हार्ट फंक्शनिंग बराबर नहीं था। फिर आफ्टर अ पॉइंट मेरा हार्ट चेंज हुआ एंड मैं वो सब कर सकता हूँ जो एक ऑर्डिनरी आदमी करता है। बस थोड़ी सी पेन रहती है, वो फॉर 6 months to 1 year डॉक्टर ने कहा है। भी मेरा 3 months है पर मुझे अभी कुछ पेन नहीं है, थोड़ी पेन रहती है। मुझे 10% ऑफ पेन जो मेरे बोन्स जो यहाँ से कटे हैं तो वो सिर्फ रिकवर हो रहे हैं, तो उसके वजह से ही थोड़ा पेन है। अदरवाइज द लाइफ इज गोइंग रियली ग्रेट। आई डू एक्सरसाइज, मैं साइकिलिंग करता हूँ 30 मिनट्स के लिए, देन वॉकिंग करता हूँ, देन नॉर्मल एक्सरसाइज भी चालू ही रहती है जैसे कि अपर बॉडी एंड लोअर लिम्स के ऊपर। भैया एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, आप घर पे बैठ नहीं सकते, आप बोर हो जाओगे पहली बार तो बैठते बैठते। सो इट्स बेटर टू डू समथिंग इंस्टेड ऑफ डूइंग नथिंग। सो इट इज़ अ गिफ्ट बाय गॉड कि मुझे एक नया हार्ट मिला है, अ वेरी हेल्दी हार्ट विच इज़ helping me to live for a long. And I would thanks to all the doctors and nurses of the hospital and everyone near my society जिसने मेरे लिए प्रार्थना की है भगवान से। एंड मेरी हिंदी थोड़ी वीक है so I'm sorry and yeah that's it and I'm going with a very great life and I hope for everything to go much more better. It is indeed faith reaffirming to see the good that can be achieved from organ and tissue donation and transplantation and how it can lead to the betterment of many lives. अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी को, जो कि सदैव नोटों के साथ जुड़े रहे हैं और जिन्होंने नोटों एवं अंगदान से संबंधित प्रत्येक समारोह की आकर शोभा बढ़ाई है। मैं उनसे निवेदन करती हूं कि वे कुछ शब्द कहकर सभी प्रतिभागियों को संबोधित करें। देश के लोकप्रिय यशस्वी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हमारे तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय भास्कर जी, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजेश जी और हमारे विभाग के सचिव श्री राजेश भूषण सहित यहाँ मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर प्रमिला गुप्ता जो महानिदेशक भी रह चुकी हैं और साथ ही निदेशक नोटों के डॉक्टर वीसी अग्रवाल और सभी राज्यों से जो भी जुड़े हुए हैं उनके सभी पदाधिकारीगण और केंद्र सरकार के हमारे सभी पदाधिकारीगण, नोटो और सोटो रोटो के सभी हमारे मित्र बंधु, मुझे खुशी है कि आज 11वां भारतीय जो अंगदान दिवस मनाया जा रहा है। शास्त्र में कहा गया है कि अंगदान से बड़ा दान कुछ भी नहीं हो सकता। अंगदान, जीवन दान, महादान, महाकल्याण। और इसी परिभाषा को परिभाषित करते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने भी अनादिकाल से, शायद आपने देखा होगा कि गणेश जी का उस समय उस जमाने में और कोई सोच भी नहीं सकता था, और उस समय गणेश जी के गले को भी काट करके और हाथी का सूर लगाया गया। ये क्या है? ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ही है। और मुझे लग रहा है कि जब उस जमाने में इसके प्रति इतना विश्वास था, हमारे दक्ष चिकित्सक भी थे,
धन्वंतरी वैद्य, सुश्रुत, ये सभी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और आज के इस अवसर पर मैं नोटो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और विभिन्न संगठनों को बधाई देता हूँ, विशेष करके जितने भी एनजीओ के लोग जुड़े हुए हैं और इस काम को आगे बढ़ाने में सहयोगी हो रहे हैं। मैं उसका विशेष रूप से आभारी हूँ। अंगदान करने वाला हर एक व्यक्ति इस महान कार्य के माध्यम से हम कह सकते हैं कि वो अपने आप को और पूरे समाज को भी अंगदान और जीवन दान का सर्वोत्तम उदाहरण पेश करता है। जिस प्रकार मशीन के खराब हो जाने से और पुर्जों को बदलना पड़ता है, उसी प्रकार से खराब हो चुके मनुष्य के अंगों को बदलने की आवश्यकता भी पड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं, रक्त देने के वक्त लोगों को डर लगता था और रक्त अगले 48 घंटे में जो शुद्ध रक्त है वो बन जाता है, अब रक्तदान करते हैं। तो ये प्रेरणा हम सब लोगों को मेडिकल साइंस के द्वारा भी मिल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब किसी व्यक्ति को अंग काम करना बंद कर देता है तो फिर ऐसी स्थिति में अंगों को या उत्तकों का प्रत्यारोपण सबसे अच्छा और एकमात्र उपचार होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अंगदान समाज के लिए एक चमत्कार साबित हुआ है। प्रत्यारोपण के उद्देश्य से गुर्दे हों या हृदय, यकृत, फेफड़ा, अग्नाशय और आंतों जैसे अंग जीवनदायिनी होती हैं, वहीं त्वचा एवं हड्डियां जैसे उत्तकों से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। जैसा कि अभी आपने प्रेजेंटेशन में देखा, उस बहन की आवाज़, उस भाई की आवाज़ को आपने सुना है। एक व्यक्ति द्वारा नेत्रदान करने से दृष्टिहीन हुए 2 लोगों को नेत्र मिल जाता है। कमल नयन, भगवान राम का नाम कमल नयन कहते हैं कि उनका आँख कितना कमल के जैसा है, और इसलिए एक नेत्र का दान करना हमारे लिए जीवन में इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। एक व्यक्ति के अंग प्रत्यारोपण की सुविधा हर एक मिनट में, एक व्यक्ति की अंग प्रत्यारोपण की सुविधा न मिलने के कारण जान चली जाती है। और साथ ही वह अत्यंत ही दुख की बात है कि हमारे देश में कई लाख लोग और अंग प्रत्यारोपण के लिए वेटिंग लिस्ट में हैं, इंतजार कर रहे हैं, और उन्हें अंग दान करने वाले समय पर नहीं मिल पाते, उसके कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। भारत सरकार नोटों के माध्यम से राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम लागू कर रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं। जीवन बचाने हेतु प्रत्यारोपण के लिए अंगों की उपलब्धता में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास भी जारी है। उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। उसके लिए अलग से मैंने कई बार व्यक्तिगत रूप से नोटों के पदाधिकारियों से बातचीत की है, और उसमें और भी उन्हें शक्ति देने की ज़रूरत है। नोटों को हम जितना शक्ति प्रदान करेंगे उतना ही अंगदान के प्रति लोगों में प्रेरणा भी जगेगी और उसके अधिकार भी विभिन्न क्षेत्रों में अधिक बढ़ पाएंगे। देश में अंगों की व्यापक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मृत व्यक्तियों के शरीर से अंग प्राप्त करने में बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ब्रेन स्टेम मृत व्यक्तियों के, उनमें दिल की जो धड़कन रुकने से पहले और उससे प्राप्त हुए अंगों को सबसे सही माना जाता है। कोई भी ब्रेन स्टेम मृत अंगदान दाता 8 तरह के, और हमारी मान्यता है कि अंग और कई तरह के अन्य उत्तक दान कर सकता है। उससे कई 8 लोगों का जीवन या उनके हर प्रकार की सुविधाएं हो सकते हैं। हमारे सफदरजंग अस्पताल में इसका कार्यालय भी है। लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधाएं उसमें देने के उद्देश्य से एक वेबसाइट भी उपलब्ध है, और टोल फ्री नंबर भी इस हेल्पलाइन सेवा 24 घंटे हमारे संचालित है। ये खुशी की बात है। मौत के बाद अंगों और उत्तकों के दान के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन प्रतिज्ञा की सुविधा भी प्रदान की गई है। मुझे हाल ही में कुछ दिन पहले मैं उस क्षण को देखा हूँ। हमारे बीच बैठे हुए डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, जब इनकी माता की मृत्यु हो गई और मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ था, और मैंने देखा कि कुछ पत्र वो हस्ताक्षर कर रहे हैं, प्रतिज्ञा पत्र। तो मुझे लगा कि क्या बात है। मैंने जिज्ञासा की और लोगों से पता चला कि
माता जी की शरीर को देहदान करने की बात इन्होंने सोचा है। सचमुच जहां आंखों में आंसू है, पूरे परिवार और परे परिजन रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और वहाँ इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कोई साधारण व्यक्ति नहीं ले सकता। एक तो माँ की इच्छा रही और पुत्र ने माँ की इच्छा के अनुकूल काम किया। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने उस प्रण को प्रतिष्ठा पूर्वक कायम रखने का काम किया है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 2 लाख से ज़्यादा किडनी फेल हो जाते हैं, और हम उसका प्रत्यारोपण के लिए केवल 8,000 से 10,000 ही हमको अंग किडनी मिल पाता है। साथ ही हार्ट फेल्योर के 5,000 केस होते हैं, परंतु प्रत्यारोपण केवल 339 केस ही अभी तक कर पाते हैं। लीवर फेल होने के 30,000 केस होते हैं, पर प्रत्यारोपण सिर्फ 1,800 से 2,000, ये डाटा जो हमें बताया गया है, वे केस भी संभव हो पाते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 1.5 लाख व्यक्ति सड़क, ट्रैफिक और हादसों से मौत के शिकार होते हैं, जिसमें अधिकांश युवा होते हैं, और उस जवानी में ही उनकी मौत हो जाती है, और उनके अंग दूसरों की जान बचाने के लिए कभी कभी उपयुक्त भी होते हैं। अगर उनके परिवार से राय परामर्श करके और उनसे अंगदान का प्रयास किया जाए तो कई लोगों का प्राण भी बच जाता है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और इसलिए देश में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। जहाँ सामाजिक संस्था इसमें बेहतर काम कर सकते हैं, सरकार के साथ सहयोग करके वो आगे बढ़ सकते हैं, वहीं सामाजिक सेवा का भाव लेकर के मानव सेवा, माधव सेवा, इस बात को मान करके हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। भाई और बहनों, मुझे लग रहा है कि क्षेत्रीय स्तर पर जो क्षेत्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण के लिए जो रोटो संस्थान स्थापित किए गए हैं, साथ ही राज्य के स्तर पर भी जो सोटो है, अस्पतालों में घर परिचर्चा इकाई तथा महत्वपूर्ण स्थलों पर अपेक्षित अनुरोध पटल प्रदर्शित किए गए, जिसमें यह उल्लेखित है कि कानून के अनुसार जो हमारे सभी ड्यूटी पर डॉक्टर हैं या प्रत्यारोपण समन्वयक हैं या हमारे काउंसलर और ब्रेन स्टेम मृत व्यक्ति के परिवार में अंग देने के लिए हम अनुरोध करते हैं और अनुरोध करना चाहिए, जिससे कि अंगदान करने में अधिक से अधिक सुविधा हो। आप जानते हैं कि भारत में प्रथम अंग प्रत्यारोपण मई 1965 में मुंबई के KEM अस्पताल में किया गया था। तब से प्रत्यारोपण और किया करने की दिशा में हम अत्यधिक प्रगति कर चुके हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। मानवीय अंगों को निकालने एवं अंग प्रत्यारोपण को नियंत्रित करने, अंग व्यवसाय को रोकने के लिए 8 जुलाई 1994 को मानवीय और अंग प्रत्यारोपण एक्ट को भी महामहिम भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की है। 2011 में संशोधन उपरांत केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन अथवा नोटो और क्षेत्रीय स्तर पर, जैसा मैंने पहले कहा, रोटो और स्टेट राज्य के स्तर पर सोटो, इसकी भी स्थापना हो चुकी है। किंतु उसमें कुछ सुधार की भी आवश्यकता है और उसमें कुछ समयानुसार उसमें कुछ और भी चीज़ें जोड़ने की आवश्यकता है, जिससे कि अंगदान के प्रति लोगों में और भी दृढ़ता हो सके संकल्प को आगे बढ़ाने में। मुझे लग रहा है कि जो राजकीय एवं क्षेत्रीय स्तर के डाटा का केंद्रीयकरण आवश्यक है और जो कि एक केंद्रीय पोर्टल पर भी उपलब्ध हो, और एक जैसे क्लिक करते हैं तो हमको पूरे देश का डाटा दिखाई पड़ जाए कि कहाँ क्या स्थिति है। इसलिए उपलब्ध डाटा और नोटों के डाटा में कोई विसंगति ना हो, इसके लिए एक केंद्रीय पोर्टल पर डाटा होना आवश्यक है। साथ ही हम सभी राज्यों के क्षेत्रों में नोटों द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय रजिस्ट्री पर उपलब्ध अंगदानकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं के प्रत्यारोपण को, उसके डाटा को नियमित रूप से डालने का भी हम अपील करते हैं, और इससे अंग एवं उत्तक व्यवसाय में लगे बिचौलियों द्वारा गरीब लोगों के शोषण पर रोक लगेगी और सरल और सुस्पष्ट एवं पारदर्शी तंत्र की स्थापना भी हो पाएगी।
तो मैं आज अपने देश के प्रत्येक नागरिकों से अपील करना चाहता हूँ कि हम और आप मिल करके ऐसे कामों को, पुण्य काम है जीवन में, इससे बड़ा पुण्य काम कुछ भी नहीं हो सकता, और इसलिए अपने परिवार को भी अंगदान करने का प्रेरणा जगाने का काम हम सभी मिलकर करें। मुझे खुशी हो रहा है कि मैंने पिछले 4-5 वर्ष पहले अपना नेत्रदान का संकल्प लिया था, और मैं पिछले 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, जब मैं दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े आश्रम है और वहाँ मुझे आमंत्रण मिला कि 1000 नेत्रदान वहाँ होना है, उस कार्यक्रम में मुझे शरीक होने के लिए आदेश हुआ था। मैं वहाँ गया था, स्वपरिवार गया था। मैंने कभी अपने परिवार को कभी कहा नहीं, मैंने आँख नेत्रदान स्वयं किया था, लेकिन किसी को, परिवार को मैंने उसके लिए बाध्य नहीं किया। लेकिन जब मैंने देखा कि वहाँ हजारों लोग नेत्रदान कर रहे हैं, तो मेरे बगल में मेरी पत्नी थी, वो खड़ी होकर के उसने कहा कि मैं भी नेत्रदान के लिए अपना वचन देती हूँ। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की प्रेरणा जगनी चाहिए, और ये आवश्यक भी है हमारे लिए। आप जानते हैं कि मनुष्य का शरीर ये नश्वर है, आत्मा अमर है, लेकिन जब तक शरीर है वो शरीर सबसे अधिक उपयोगी है, और उस शरीर को हम कहते हैं कि शरीर से ज़्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है। करोड़ों अरबों की संपत्ति है, अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो उस शरीर का क्या महत्व है। इसलिए हमें स्वस्थ भी रहना है, और स्वस्थ रह करके इस शरीर को भोग का, विलास का चीज़ नहीं है। ये शरीर प्रकृति का प्रदत्त चीज़ है। कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व निर्मित यह अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से निर्मित शरीर पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है, और इसलिए शरीर आपका नहीं है। ये शरीर का पर घमंड भी नहीं करना है। ये 5 तत्वों से निर्मित शरीर है और पंच तत्व में विलीन हो जाता है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, क्या हम किसी के जीवन को बचाने में अगर अपने शरीर के उस अंग को दूसरों को दान करते हैं, तो इससे दूसरा मनुष्य भी बच पाएगा। और आइए हम सभी आज संकल्प लें कि आज के इस अवसर पर 11वां प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण दिवस हम मना रहे हैं। क्या हम आने वाले दिनों में ये संकल्प ले सकते हैं कि जो हमारे हजारों लाखों लोग अंगदान के लिए अपने जीवन को, इस लीला को समाप्त कर बैठते हैं, हम उनके जीवन की रक्षा करने में हम आगे बढ़ेंगे, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। और अंत में इसी बात को कहते हुए मैं आप सबकी शुभकामना करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी सुखी हो, मंगलमय रहे, और ये मानव कल्याण, मानव सेवा, माधव सेवा की ओर आगे बढ़ते रहे। जन सेवा, जनार्दन सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, यही हमारे जीवन की पूर्णता है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी विशिष्ट अतिथि महोदय का कि उन्होंने इतने सरल शब्दों में इतने अंगदान एवं प्रत्यारोपण के अति महत्वपूर्ण संदेश को हमारे सभी देशवासियों तक पहुँचाया। साथ ही में डेटा के केंद्रीयकरण और नोटों को अधिक शक्ति प्रदान करने की भी बात करी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अंगदान, जीवनदान, महादान, महाकल्याण का नारा देकर प्रेरित किया कि हम बढ़ चढ़कर अंगदान करें और हमारा उत्साह बढ़ाया। मुझे आशा है कि आपके उदाहरणों एवं शब्दों से कई लोग अंगदान की शपथ लेंगे। We now move on to the dedication part of our event, which is the felicitation of deceased donors. During the previous years, we have had the honor of inviting the families of these deceased donors to New Delhi and felicitating them in person. Unfortunately, due to the restrictions imposed by the COVID-19 pandemic, we have been unable to organize a physical event this year, and we will be trying to honor them through this webcast. The certificates of appreciation have been emailed to the respective states and SOTOs, and the governments of Chandigarh, Maharashtra, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and West Bengal are hosting a parallel program with us where they will be felicitating the donor families physically. The rest of the states will be hosting physical programs in the near future. I would now like to request our Honorable Chief Guest, Dr. Harshvardhan Sir, to kindly read out the names of the deceased donors which will be displayed onto the screen as a form of virtual felicitation to recognize and commemorate the most noble and selfless act one can do for humankind. We have
Dr. Muralidhar Reddy from Andhra Pradesh, followed by A. Govinda Rao and Chala Shrinu, all from Andhra Pradesh. We congratulate them and felicitate them on behalf of the organization. Then we have Saurabh Prateek and Rohit Kumar from Bihar. They have been instrumental in donating heart, liver, corneas, kidneys. Again, a big felicitation for them. Then from Chandigarh we have Miss Rekha, Mr. Amandeep and Mr. Satish Kumar. We felicitate them. Dr. Prem Kumar, Rajmal and Shakuntala from Delhi, NCR region. From Gujarat, Shri Keval Bhailal Patel, Shri Piyush Naran Bhai Mangukhia, Shrimati Mona Lisa Alkesh Mahata. Mr. Madhu from Karnataka. Mr. Anvit and Lely Gopa Kumar and Calvin Joy from Kerala. From Madhya Pradesh, Mr. Lalchand, Mrs. Harshita and Mr. Ashok Tadveda Vecha. From Maharashtra, Miss Raniana Rajkumar, Mr. Mahesh Vijay and Mr. Ganesh Kumar. From Odisha, Mr. P. Priyanka Rani Patra. This is, I think, Miss. This is Miss Priyanka Rani Patra and Miss Suchitra Dash and Miss Raja Lakshmi Dash. All kidneys. From Rajasthan, Mr. Jitendra, Mr. Aditya, Mr. Sani. From Tamil Nadu, Mrs. Jamuna, Mr. D.V. Sampath Kumar, Mr. Shiva Lingam. From Telangana, Nikhil Banda, Harshvardhan Reddy and Yehas Karthikeya. From West Bengal, Sujoy, Sangram Bhattacharya and Piyush Kant Ghosal. Thank you, sir, for felicitating our superheroes in such a nice way. Now we move on to the announcement of awards for exemplary performance in the field of organ donation and transplantation. The award certificates have already been shared with the respective awardees. First, coming on to the Best State Award. The dedication of a state government to a social cause is shown by its performance in that sphere. The Best State Award is being awarded to the state of Tamil Nadu, which has performed 295 deceased organ transplants in 2020, out of which 76 are lung transplants and many of which helped the patients who were suffering from acute severe COVID-19 infection. This is also the 5th time that this honor is being bestowed upon the state of Tamil Nadu. And let's join the felicitation ceremony which is being organized in the Roto of South in Chennai, where the Honorable Minister for Health and Family Welfare, Government of Tamil Nadu, Dr. C. Vijaya Bhaskar, will be receiving the award along with his team.
The Regional Director of Chennai, Dr. Roshni, has presented the award to Dr. C. Vijay Bhaskar and his team. Now we move on to the next awards. SOTOs and ROTOs are the state and regional level networking limbs of NOTO. This year, the Best SOTO Award is being awarded to the SOTO of Maharashtra for establishing an efficient system of organ procurement and allocation, which enables excellent utilization of deceased donor organs, which is a priceless national resource. Also, they conducted a total of whopping 351 IC activities in their state to spread the noble message of organ donation. Also, the award for Best ROTO is being awarded to the ROTO West, which is housed at the King Edward Memorial Hospital in Mumbai, for being the most dynamic ROTO and in organizing IC and training activities, and they have set up the maximum number of SOTOs under their region. Let's join the award ceremony which is being organized in Mumbai. Now let's move on to our further awards. A hospital is the primary unit of the organ donation and transplantation program. This year, the Best Hospital Award is being awarded to PGI MER Chandigarh for being the center which has the maximum number of deceased donations, as well as for organizing a large number of awareness activities. They are also the only center which are currently performing transplants after donations from cardiac deaths. Transplant coordinators play the most important part in the organ donation and transplantation program, and their tireless dedication is what makes the program successful. The award for the Best Transplant Coordinator is being awarded to Dr. Navdeep Bansal, who is working in PGI MER Chandigarh for helping many families see the light in consenting to donate the organs of their loved ones after demise, and spreading this message far and wide with a large number of IC activities. So let's join the award ceremony being organized in Chandigarh at the Roto North. After recognizing the outstanding contributions by the state, SOTOs and transplant professionals, it is time to invite our Honorable Chief Guest, the Union Minister of Health and Family Welfare, Dr. Harsh Vardhan, who has always cherished the field of organ donation and transplantation and has constantly lent his support to facilitate its development in India. I request him to address the dignitaries, awardees and attendees on this fateful occasion. Namaskar.
my dear colleague Shri Ashwini Chaubeji in the Health Ministry, my dear colleague ministers Dr. C. Vijay Bhaskar Reddy from Tamil Nadu and also Rajesh Topeji from Maharashtra, who I understand are part of the program, maybe others are also there, all the distinguished senior officers, secretaries, those organizing ROTO and SOTO activities in the states and in our regions, and of course our NOTO senior people here, Dr. Pramila Gupta, Dr. V.C. Agrawal and their colleagues, all the persons who have been awarded today, the organizations who have been awarded today. I have to compliment all of you, thank you, and convey my heartfelt felicitations from the deepest core of my heart for the great work that you have been doing, and especially for the families of the people who were instrumental in making this organ donation a movement in the country. It was an emotional moment to see these names of people, diseased persons, who donated liver and heart and kidneys and lungs, etc., to those. And I was reminded of a similar function that we had organized at the All India Institute of Medical Sciences last year. It was such a touching scene at that function where we had both sets of families. Families whose members had donated because they got some accident, they had some suffering, they had a brain dead individual in the family, but they donated all the organs to others. And they were then the families of those who were recipients and the recipients themselves. And it was such a touching scene at the campus of All India Institute of Medical Sciences in the auditorium, when the family members could actually see, and they were seeing their own children and their own family members in the bodies of others, and they were like I think it's beyond description to describe the emotions of that particular event. Today, unfortunately, because of COVID, I have not been able to see all of you physically, but I can imagine. You see, we have no words to express our respects for the family members, those who I think did their best. They dedicated their life for the country, and then they after death have also helped many. And it is, I think, a huge number. I have to particularly congratulate Tamil Nadu and Maharashtra and all our regional units also in Chandigarh, Mumbai, Chennai, Kolkata and Guwahati. And I understand we have almost a dozen states with active programs in the organ and tissue transplant area with these very dynamic organizations. Some of them have been honored, but that doesn't mean that the others have not worked well. Everybody is working so hard to make it a big movement in the country. I remember that during this COVID crisis, I had to talk to Dr. Vijay Bhaskar Reddy for the lung transplant of a doctor in the state of Karnataka, who was admitted and the lung was required. That doctor had served
so many people, had saved so many lives, and he became a corona warrior, and being a corona warrior, he himself got affected by COVID, and in spite of the best treatments, the lungs could not be saved, but then came to the rescue people like Dr. Vijay Bhaskar Reddy, who helped and ensured that the lung could be made available. But these are, you see, this is just the tip of the iceberg. So much is happening, so many people are contributing, so many things are into this process, whereby you see this organ transplant and tissue transplant activity growing in this country in a big way. You see, Nota was born in 2011, and I remember that in 2014, when I was Union Health Minister here, I had the privilege to visit Spain, which has the best transplant and organ donation program in the whole world. Although we have made significant strides in this field, at a humanitarian level, at a public awareness level, at the sincerity level, at the level of, you see, setting up facilities, at the government level, what are the issues that Rajesh Topeji mentioned, I think is already in the program. We are helping many of these poor patients for giving them these therapies, and also taking care of the patients who have these brainstem injuries and brain deaths, etc. And there I could see that there was so much of, you see, the key person in the whole movement is a transplant, you see, coordinator. And this is a coordinator who can actually convince the family at that critical time, because the family is struggling with emotions, they are praying to God, and they are doing their best to ensure that they visit every religious place to see that their kith and kin, they are saved. But then how difficult it is at that time to convince the family members that we can probably not save this patient because he is already brain dead. And then but the people have hope against hope, and they are still have so much of faith in God. But then to convince at that moment, and there is that role of these transplant coordinators. I am happy that some of them have been honored, and I had the privilege to talk to them in Spain at that time. And when I went into the depth of this whole program, I could convince myself that they are probably the biggest, I think, key in the success of the program. And that is why, because of their involvement, the program in Spain is rated as the best in the whole world. And just to give you a feel of the whole thing, I think we have 48 transplants per million happening in Spain. As compared to that, in USA we have something like 33, 34. In UK we have something like 24 per million. But as I said, we have to still go a long way. We have less than 1 per million in India. Although in recent times we have become probably the third best country in the whole world in terms of having accomplished things successfully in this particular field. And there are so many people who need to be thanked today, who need to be felicitated today. Whatever has been done, it is just very, very symbolic. And hats off to these families who actually contributed to making this a big success. Preceding this program, in the morning at 10 o'clock, I was part of another program where you will be happy to know that 79,532 Jawans of the CRPF, Central Reserve Police Force, in the presence of their senior officers,
they had pledged and had delivered to me their pledge for donating their total body and organs for the cause of the nation. So this is such a and can you imagine that how much time it took for these 79,000 people to deliver that pledge? They had a function on 14th of August this year itself during COVID time, organized in collaboration with AIMS New Delhi, in which they were like briefed about this subject in detail, and within 3 months they created a movement of this magnitude, and today within 3 months they could actually, so there was the organ retrieval banking organization of AIMS, and now we have this function happening here with Noto and Roto and Soto, and with the presence, dignified presence of our ministers and my colleague minister here, all the deceased persons, families, and all those who have received. I think everybody deserves the highest applaud of the society. A couple of points, you see, there's one point that was made by the DG of CRPF in the morning, that you may pledge, but once you pledge, you have to make sure that you keep your organs healthy, you keep your body healthy, because that is the most important thing. And this is, I think, so important to actually keep remembering. Already there is a Fit India movement in the country which encourages us to keep ourselves fit. And the another point that I wish to make at this particular moment is that while we pledge our eyes or our body or our organs or our tissues, as we know that a person, once he donates his eyes, he can actually help at least 4 persons getting back their sight. If he is a part of this movement, he can actually help at least 7-8 people by giving his heart, his lungs, his intestines, his pancreas, his liver, his kidneys, and so many things. He can donate his bones, his tissues can be used, his skin can be used for the patients who receive burns and all that. So all these, and then it's almost like 30-40 people of different variety can get benefited. And more than that, if you have donated your whole body, and even if the organs can't be retrieved, your whole body can be used by the medical college in the dissection for the successful, you see, training and education through dissection for the anatomy, which is, I think, that's a basic foundation for becoming a good doctor, and that's how a doctor can actually ultimately serve humanity all through his whole life. So this is a very, very pious movement. I don't consider it as only a technical or a scientific or a medical activity. I consider it as an act of God. It has the blessings of God. Whosoever, whether a doctor, whether a transplant coordinator, whether the family of the deceased, or whether the person who receives the organs or the tissues, everybody is part of this pious movement. And then the very fact that a lot of our policemen, the traffic police, and people on the roads, and those helping in logistics, creating these green corridors, our officers in the state governments, our directors of the prestigious institutions, our surgeons, everybody is contributing his or her bit. And when it was, we just heard somebody saying that he never imagined that he could get a heart during COVID times, and the person had to return from US to India just because US was not able to provide him a heart, and he had that assurance or an imagination or the faith in God that probably if he returns to India, the God might be able to help me. And during COVID times also, this young boy
could get a heart. During these COVID times, incidentally, that's just an incident. I used to go and spend a significant amount of time when our dear leader Arun Jaitley ji was in hospital in the ICUs, and at that time I was told that there is a heart transplant going on. I have seen that nitty-gritty at the last moment from the closest of quarters, and I could spend a couple of hours inside the operation theatre seeing that heart transplant happening, and could see both the aspects of the person whose heart was being delivered and whose heart was being transplanted, and the person who received. And then I visited that patient for quite some time. So I have not only from imagination, from the closest of quarters, experienced that this is probably the most pious activity. So whatever we do for this, I think it can't be compensated by anything, and we have to put our heart and soul into ensuring that this becomes a huge movement. We are on top of the whole world in terms of its success, and I am sure that with leaders like Dr. Vijay Bhaskar Reddy and all our health ministers, Rajesh Tope, and many others who will not take it like a routine activity, this must be on the top of our agenda. And I am sure that today is the best day to pledge around that. With these few words, once again, all my congratulations to all the people who have been awarded today, the states, the ROTOs, the SOTOs, the transplant coordinators, the donors, and those who received donation. I think all of us are lucky to be part of this function. Thank you so much, and keep this flag high, and I am sure that we will be able to serve humanity in the best possible manner. Thank you so much. Namaskar. Jai Hind. जरा सा सचमुच आज मैं बहुत ही इस नेक कार्य के लिए अपने कप्तान स्वास्थ्य मंत्रालय के हमारे योग्य और लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, और मैंने जो जीवन में पहली बार जो मैंने आंखों से देखा है, आज भी मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद उस स्थान पर मैं रहता तो मैं ये कर सकता या नहीं, ये तो प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। किंतु डॉक्टर साहब ने जो, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अपनी माता जी का देह दान करने का, अंगदान ही नहीं, देह दान करने का जो संकल्प प्रतिज्ञा पत्र ही नहीं भरा, मैं अस्पताल जाकर के उनके साथ और माता जी को वहाँ विदा किया। आज भी मेरे आंखों के सामने जब वो दृश्य आता है तो मैं रो पड़ता हूँ। इतनी बड़ी कठोर प्रतिज्ञा कोई वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में ये संकल्प दृढ़ता के साथ करने का और लोगों को प्रेरित करने का जो आपने काम किया है, इसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से और व्यक्तिगत रूप से मैं डॉक्टर साहब को और माता जी की स्मृति में मैं चाहता हूं कि उस माँ ने आप जैसे रत्न को पैदा किया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये ठीक है कि अंगदान को तो मैं बराबर प्राथमिकता देता रहा हूँ। दादी जी ने अपने हड्डी को दान कर दिया था, लेकिन देह दान के प्रति अभी भी मेरे मन में संशय की स्थिति बनी हुई है। मैं आज भी देह दान को स्वीकार नहीं कर पा रहा, लेकिन आपने इस कठोरता को अपनाने का काम किया। डॉक्टर साहब, मैं भाव विभोर हूँ, माता को याद कर रहा हूँ, और मैं आज आपको भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि माँ के आशीर्वाद से आप जैसे पुत्र श्रवण कुमार का उदाहरण आपने दिया है, मैं आपको बधाई देता हूँ, आपके परिवार को मंगल कामना, और मैं ये माता की स्मृति का ये पुष्प आपको अर्पित कर रहा हूँ।
एडजस्ट कर दो, मेरा 12:30 दूसरा शुरू होने वाला है प्लीज। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अश्विनी कुमार चौबे जी का। And sir, I would like to thank you for your inspiring, touching and extremely motivating words. And we are extremely fortunate to have a leader this committed to this virtuous cause. Now with the permission of the Honorable Chair, I would like to invite the Honorable Minister of Health and Family Welfare, the Government of Tamil Nadu, Dr. C. Vijay Bhaskar, to say a few words. इसके बाद खत्म कर देना तुरंत। Minister is at Pudukkottai. If you can unmute the Pudukkottai mic. नमस्ते सर, ऑनरेबल मिनिस्टर सर, मैं सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। हमारे मंत्री जी इसमें है सर, पुदुकोट्टई वाले माइक को हमने करना है। थैंक यू कर दिया। ओके, इट्स फाइन, परफेक्टली फाइन। थैंक यू करो। अरे आप विजय भास्कर जी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं है Thank you sir for थैंक यू। taking time out of your busy schedule to address us on this fateful occasion. Thank you very much sir. As a tradition, all guests and participants of this event take a pledge to donate their organs after passing on. I would like to request our Honorable Chief Guest to guide all the participants through the organ donation pledge, which will be displayed onto the screen. बोलना I pledge to donate such of my organs and tissues as could be used after my death to give life to someone else. Keeping in view the acute shortage of organs and tissues for transplantation in India, I also pledge that I will make all-out efforts to inspire the families of the brainstem dead persons to donate organs and tissues that could give new life to someone. Thank you, sir, for leading the way and motivating our nation's citizens to embrace the path of altruism and to pledge for deceased donation. Now I would like to invite Director NOTO, Dr. V.C. Agarwal, to deliver the vote of thanks, followed by the national anthem. Good afternoon. It is my proud privilege to give a vote of thanks for this noble event of national importance. On behalf of National Organ and Tissue Transplant Organization, I would like to wholeheartedly thank our Chief Guest, Honorable Health Minister Dr. Harshvardhan Ji, who has always been on the forefront for the activities related to the organ donation and has given his unconditional support for this program. We are grateful to the Minister of State, Health and Family Welfare, Shri Ashwini Kumar Choube ji, for his gracious presence and all the contributions he has made to this program. We are indebted to the Secretary Health, Government of India, Shri Rajesh Bhushan ji, for taking out time from his busy schedule to grace the occasion with welcome address. NOTO expresses gratitude to the families of the deceased organ donors, honorable ministers from state of Maharashtra and Tamil Nadu, regional and state organ and transplant organizations, transplant coordinators and transplant surgeons for their active participation and exemplary role in this program even during the COVID-19 pandemic. I thank Director General of Health Services, Dr. Sunil Kumar, Principal Consultant, Dr. Pramila Gupta, Additional DDG NOTP, Dr. Anil Kumar, for their guidance and support. Further, I convey heartfelt gratitude to our officers of NOTO, especially Dr. Vasanti and Dr. Purva Singh, and the support staff of NOTO for their untiring efforts to make this event successful.
I will be failing in my duty if I do not appreciate NIC for this meticulous webcast. It is my humble submission that due to shortage of time, I am unable to announce names of all the individuals who have contributed for success of this event. I thank each one of them from the core of my heart. In the end, I thank all the viewers who are watching this program through webcast.